I was saying that BG Churasya is also an amazing book. It is a short book, a handbook, but this doesn't mean that it is very short. It is concise, has a lot of stuff covered in a few lines. So there would be certain places where you might need to refer to the long books like KLM or Grace for guidance, okay, for extra guidance, or the internet or the YouTube, of course. YouTube is the best place. So like from where you need to get your concepts cleared, okay. And apart from that, guys, KLM and Grace की तो मैं बात कर चुका हूँ, right? BD Churasya से you guys don't need to do the clinicals. Okay, the clinical portion can be done from KLM or Grace. It's just a few pages from there. Okay, but still it is very important. Okay, and what are clinicals? Basically, this was a question, and I think I have already addressed that. Clinicals are basically some cases given to you. Okay, just like CBL, and in the clinicals, you need to apply your theoretical knowledge that you have gained and apply it on that particular case and diagnose the disease. Okay. Then, and sometimes they might ask you the treatment as well if you have studied the treatment in the course or in the syllabus. Then another question was, okay, Fahad Bhai had a physio class today, and in one lecture they completed the entire chapter. It was very overwhelming. Chapter 25, ECF, ICF and edema, do we have to do that? And okay, so basically, यार देखो, मेड स्कूल है यार, ओवरवेलमिंग तो शुरू में आपको लगेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग जॉब. मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ इसकी इन द हाउ टू गो अबाउट MBBS, राइट? बट रिलैक्स, अभी लगेगा, बट एज सून एज यू स्टार्ट आउट, द सूनर यू स्टार्ट आउट, द अर्लियर यू विल गेट यूज्ड टू इट. ओके, अभी से जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम day 1 and just start giving it this overwhelming sort of hard work, and in no time you'll be done with the syllabus, you'll be done with everything would be prepared, and literally then you'll be relaxed. Okay, and trust me, if you've done the entire course once properly, during the second read you'll feel quite relaxed. Okay, you'll feel, or the third read, some of you might do the might revise the stuff in 3 times or 4 times, but it doesn't matter. You can do it as many times as you want, as long as you are getting the concepts and you are learning the stuff. Okay, usually 1-2 बार में हो जाता है, ठीक है. Then but guys, देखें, शुरू से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, एंड तक नहीं छोड़िएगा. देखें, कुछ लोग आपको ये कहते हैं कि ऑफ कोर्स शुरू नहीं पढ़ो, ये करो वो करो. देखो, ठीक है, रिलैक्स कर सकते हो 1 हफ्ता तकरीबन, पहला वाला चलो समझ आता है, एंड उसके बाद गाइस अब पढ़ लेना, ठीक है. और अभी तक रिलैक्स करते हुए आ रहे हो, छुट्टियां करते हुए आ रहे हो, तो अब पढ़ लो भाई, ठीक है. अब रिलैक्स मत करना, क्योंकि वरना अगर अभी रिलैक्स करोगे तो क्लास आपसे बहुत आगे निकल जाएगी. क्योंकि एज दिस पर्सन सेड के एक दिन में एक लेक्चर में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, तो ऑफ कोर्स यू नीड टू, मतलब क्लास के साथ भागना तो पड़ेगा ना आपको. एंड गाइस, शुरू में आपको ऐसा लगेगा, जब एज सून एज यू रीच, यू गो अहेड ऑफ द टीचर, देन इट विल बी फाइन. ओके. And of course, trust me, if you are reading the entire stuff from the lecture notes and basically from the books, the learning objectives are to be covered mainly. Okay, the extra stuff, it's up to you to read it or not, but the learning objectives have to be covered from the books. Okay, it's, as I told you, that it's humanly impossible for the teachers to teach everything in that 1 hour, so you will have to learn most of that stuff using your self study. And overwhelming शुरू में आपको लगेगा, you will get used to it very soon. ठीक है, ये ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है. एंड बाय द वे, चैप्टर 25 ECF, ICF एंड एडिमा, यस ऑफ कोर्स यू नीड टू डू दैट. ECF ICF वाला काफी फेवरेट टॉपिक है फाउंडेशन का फिजियोलॉजी में, एंड एडिमा का भी ऑफ कोर्स. एडिमा बार बार रिपीट होगा, ब्लड में भी रिपीट होगा वगैरह वगैरह, लेकिन आपको पहले से ही पता होगा एडिमा होती क्या है, बट स्टिल, एंड दिस प्रीटी मच कंप्लीट्स इट. तो मेरी एडवाइस समझ में आ गई ना आपको? आपने अभी से स्टार्ट करना है, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव स्टार्टेड इट आउट ऑलरेडी. एंड गाइस, शुरू से खत्म करने की कोशिश करें, ठीक है. आप अगर वक्त से पहले खत्म कर लेंगे तो आपके ऊपर बोझ नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा, मेंटल ब्रेकडाउन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है. लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि यार अभी तो स्टार्ट हुआ है, छोड़ो बाद में करेंगे, टाइम होगा, एंड में पढ़ लेंगे. आज मैंने पहले ही अपनी दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ, ये A लेवल्स या इंटर नहीं है भाई, ठीक है, कि एंड में आखिरी बस हफ्ते में कर लो, हो गया काम. नहीं, ऐसा नहीं है. ये इसमें शुरू से पढ़ना होगा आपने, ठीक है. और अगर आप शुरू से पढ़ने की आदत डाल देंगे ना, तो आप बहुत जल्दी खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है. आप टीचर से पहले खत्म कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टीचर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, अभी भी इतनी तेजी से नहीं जा रहे हैं जितनी तेजी से ये कोर्स जा सकता है वैसे नॉर्मली, ठीक है.
एंड ऑफ कोर्स आपके पास लेक्चर स्लाइड्स आ रही हैं, तो ऑफ कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, तो आप उसको साथ रेफर करते जाएं। लेक्चर स्लाइड्स ऑफ कोर्स आपने पढ़नी है, ठीक है, इट विल गिव यू अ जनरल आइडिया ऑफ व्हाट द चैप्टर इज अबाउट, एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव टू डू द डिटेल्ड स्टडी फ्रॉम द बुक। एंड नोट्स की तो मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ शुरू में, वो उस क्वेश्चन का आंसर कर चुका हूँ, जैसे उन्होंने कहा था कि फिजिकल नोट्स वर्थ इट है या नहीं, तो वर्थ इट इसलिए है क्योंकि अगर आपने एक चीज याद करनी है, राइट, फॉर बेटर रिटेंशन ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक नोट्स, बट उसका डाउन साइड क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग है, होने दो भाई, डबल बेनिफिट हो रहा है आपके पास अगर आप अभी से स्टार्ट करें, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, लाइक फ्रॉम द डे 1 और डे 2 और लाइक शुरू से स्टार्ट करें, तो फिर नोट्स बनाएं, ठीक है, अच्छे से कंपाइल करके रखें ताकि बाद में आप अगर रेफर करें तो आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं ना कि आधे नोट्स वहां लिख दिए, आधे नोट्स यहाँ लिख दिए, आधे वहां, एंड में पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर लिख लिया, भाई सारा कुछ मिक्स कर दिया। ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप प्लीज अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग नोटबुक्स बना लेना, उस पर अपने अच्छे खासे नोट्स बना लेना, एंड गाइस ये उम्र भर के लिए एक साइड पे कर देना, बार बार आपको देखना पड़ जाएगा, ठीक है, आगे के ईयर्स में भी आपको काम आएंगे, ठीक है। एंड और कोई क्वेश्चन हो किसी को तो बस यू कैन ऑफ कोर्स व्हाट्सएप मी, बाकी बस दैट्स इट। अभी मैं अपने लेक्चर्स बनाने में लग जाता हूँ। थैंक यू।